Hello and welcome to yet another edition of Expressions for the New Indian Express. I have with me Anupam Kher, one of India's best known actors. He has many identities. We'll talk about all of them, hopefully. There's Mr. Chawla, one of India's best known editors. Anupamji, you're an actor in India, in the West. You're a Kashmiri Pandit, a very proud Kashmiri Pandit. You've been a movie bureaucrat also sometimes, sometimes successfully, sometimes not so successfully. You're the head of the anti-intolerance group in among public intellectuals in India. So you're many, many things. You're also a wonderful Instagrammer and recorder of conversations with your mother, Dulari, which I think give pleasure to a whole lot of people. So, and of course, it's your 39th year. You've just completed 39 years in the industry. You've launched your own website today. So many congratulations, and it's such a privilege to have you with us. Thank you so much. I'm so happy to see you and Mr. Chawla, who I've known, both of I have known for so many years. Yeah. And to be very honest, we all have worn hats. Yes. many hats. But Anupamji, I want to begin with your latest stint, and it's been so successful, New Amsterdam, which is possibly the #1 network show in America currently. And I believe that you shot a pandemic episode on that show, and it wasn't aired. So talk a little about that. It must have been quite something to have shot it before the pandemic happened in New York. Yeah, because in fact, we get one episode while we are shooting the next episode. So this was much before the pandemic was announced by WHO, much before this whole thing. And I was the one who gets that virus. Right. So suddenly, really? Yeah. I was the center of focus in this whole thing, and how Dr. Kapoor feels, and the whole one of the doctors dies, junior doctor dies because of that. And the next person who has been working with these patients all over the place, we have we put up a tent outside because the patients are pouring in, and we discover that Dr. Kapoor has got this virus, and it reaches a very final stage of it, and then what happens? And then that was episode 18. Right. Then we shot the episode 19, and during the episode 19, the pandemic was announced. Right. And then we had to cut down the other 3 episodes because we were supposed to do 22 episodes. And I came here, and then we were informed that they will not show the pandemic episode because it's too close to life, it's too close to reality, too close to truth. Right. But we did shoot that whole thing, and for the writers to come up with this, and it's so similar to what has happened. Yeah. How it happens through this virus and through this infection. Right. And I'm glad that, and then they showed 10 minutes of that in the final finale episode because they needed to introduce another actor who got introduced in this particular episode. Right. So otherwise, yes, it was there, and I'm glad that that was deleted because people would have thought that we are cashing in on the situation. Right. But the graph of New Amsterdam is phenomenal. That when I read the pilot episode, and I had to take a major decision before signing the pilot itself, that I will be. They had asked me to sign a 6-year contract, which I thought I will not be doing it. So I had said I will only do 3-year contract. Right. But now the show has got 3-year extension together. Right. So that means 5 years in any case going to be there. And it's wonderful to be recognized on the streets of New York and in other parts of America as Dr. Kapoor. Right. Otherwise, earlier Indians used to recognize, or Asians, or people films where Indian films are very popular. But it's a great feeling that when Americans stop you and sort of say, "Aren't you Dr. Kapoor? I wish my doctor was like you." Because my character brings out a lot of Indianness to the character of Dr. Kapoor, that he holds back. He does not sort of immediately. He is very compassionate towards his patients, etc., etc. But he also has a very troubled relationship with his son, and and you brought in a whole lot of your own personality to the room also, I believe.
I brought in a whole India to the show. Right. Apart from my personality in Dr. Kapoor's room, the pictures are actually of my parents. Right. My younger photographs are of mine. Right. But I also bring in, because I'm not an American settled Indian, so Yeah. I know exactly what is to be called, what is to be happening, what are the rituals, etc., etc. Right. And it's fun to sort of make every other actor on the set to make them do Namaste and Om Namah Shivaya, or to add little that samosa is not the only thing that we eat. पकोड़े भी खाए कि नहीं? Sorry, पकोड़े भी खाए कि नहीं? नहीं तो अच्छी अलग अलग चीजें हैं पूरा. I did a whole research about Dr. Kapoor that they had asked us for one paragraph of what is the back life of this character, Right. the backstory. Yeah. So they thought I will send them one paragraph. I sent them 16 pages. Oof. That where Dr. Kapoor was born, that where he settled in Ludhiana, and then from where he went to, when he went to, etc. So it was a great research done and then sent it to them. अनुपम, मैं हिंदी में से पूछ रहा हूँ कि वहां पर भी जाकर के आपने जो पाश्चात्य जो वेस्टर्न एंटरटेनमेंट है उसका भी भारतीयकरण कर रहे हैं आप क्या? क्योंकि मेरा नाम अगर डॉक्टर फर्नांडिस होता या डॉक्टर लुइस होता तो शायद मैं नहीं करता, पर मेरा नाम है डॉक्टर विजय कपूर. और ये बहुत बड़ी मेरी एक उपलब्धि है, क्योंकि जो वहां पर इंडियन कैरेक्टर्स को डालते हैं वो बड़े क्लीशे रिडन होते हैं. जैसे मैं कल एक सीरीज देख रहा था, उसमें वो कैरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता, वो इंडियन था, कोई 2 सीन थे उसके, उसका नाम था डॉक्टर मित्तल साहब. मित्तल उसने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया तो वो उसने कहा आई एम डॉक्टर मित्तल. Yeah, but it's fine. Also, you're so far away from your own country that you miss these small little things. और सारे मेरे अलावा पूरे सेट पे जितने भी हैं वो अमेरिकन्स हैं या ब्रिटिशर्स हैं. I'm the only Indian on the whole set. So मैं तरस जाता हूँ, और मैं इतनी अंग्रेजी जिंदगी में कभी नहीं बोली है जितनी मेरे. That also medical terms. मैं सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि इंडियंस वहां जाकर के अमेरिकनाइज हो जाते हैं, वेस्टर्नाइज हो जाते हैं. तो और एंटरटेनमेंट है या कोई और भी थिएटर है या कुछ और है, ये सैकड़ों सालों से, पिछली सदियों से, इट हैज बिकम ए टूल फॉर आइडियोलॉजिकल प्रमोशन ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज़ एंटरटेनमेंट हैज बीन बेसिकली dominated by left liberal agenda. So I'm trying to put it whether this whole show you're trying to make it more desi in terms of Indian philosophy, Indian culture, Indian etiquettes. You're trying to introduce to the West. Is it some kind of a conscious effort, or it is part of the? No, a part of it is to be authentic, to have lived 63 years of my life or 62 years of my life in India. It's not that I have gone there at the age of 35 and whatever they say I'll accept it or something like that. I have a certain amount of say that in the script. There are certain things that I get changed कि ये होगा नहीं. जैसे एक reference किसी चीज का था जो हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है. कैसे? क्या था? Sorry? क्या था वो? जैसे उसमें एक रेफरेंस था, वो बिल्ली का नाम काली रख देते हैं. अच्छा. तो मैंने कहा ये ऐसा होता नहीं है. बिल्ली और वो जो है वो काली जो है वो गॉडेस ऑफ डेथ. इट्स नॉट दैट देयर इंटेंशन इज टू सॉर्ट ऑफ, they're ignorant about it. या फिर जब वो गर्भवती एक जो होती है, वो जो लेडी मेरे घर पे आती है, तो even though I am a widower, but I do a certain ritual, which episode was directed by Lucy Liu. So there are certain things that I do bring in, और सांस लो, जैसे अच्छा बोलना बीच में. But at the same time, I am a little aware that it will be fun to have a mainstream American series to bring in a certain amount of Indianness. Right. Yeah, it's a conscious effort also. Right. And you feel that Indians there are appreciating this because they also see themselves as sort of stereotypes. Yeah. They are very, very proud of me. Yeah. They feel that because Indians over there are more Indian than Indians in India. Because उनको अपना ट्रेडिशन संभाल के रखना है, because उनको लगता है कि वो छोड़ के आए हैं देश. तो उनकी जो फर्स्ट जनरेशन खासकर जो है, उन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं या अपने मस्जिद बनाई हुई हैं या जो भी गुरुद्वारे वगैरह हैं, तो इसलिए उनको दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट.
और उनको लगता है कि हमारा अपना बंदा। मैं 550 15 फिल्में तो करके गया हूँ वहां पर। आई एम पार्ट ऑफ देयर हाउस होल्ड। You know how NRIs are, and as I live through movies, right, movies. So, and then for me to sort of bring on these small little elements, they are very thrilled about it. They feel very proud, and उनको तो मतलब उनको लगता है कि हिंदुस्तान का झंडा लेके घूम रहा हूँ मैं वहाँ पर। वो तो वैसे भी आप घूमते ही हैं। But Anupam ji, I wanted to ask you, how is life in New York? क्योंकि यहाँ तो you are a star, you have your own entourage. वहाँ things are different. You're sort of in a way beginning your career again. So that was a conscious effort, Kaveree, that I was getting a little worried about for the last 5-6 years over here being called veteran thespian legend. I know that people were doing that because of their respect for me, but एक ये क्लीशे भी है कि अब ये इतनी फिल्में कर चुके हैं, अब ये 60 की उम्र तक पहुंच गए हैं, अब इनको जैसे जर्नलिस्ट के आदि होता है। I'm sure Prabhu is the veteran thespian and legend journalist of Indian journalistic whatever. So मुझे इस बात से घबराहट हो रही थी क्योंकि अंदर से मुझे लग रहा था there is so much of work in me, there is so much of things left in me. Mind was बिल्कुल brilliantly alive. मैंने कहा यहाँ पर इसके बाद ये मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देंगे और मैं व्हील चेयर पे होऊंगा तो कोई दूसरा अवार्ड मिल जाएगा और फिर I will walk into the sun. But I will not do that. I want to reinvent myself. I want to start from a beginner's life. That's why one of the reasons of accepting this series was this, that I did not go with any burden of being Anupam Kher over there. I wanted to have an anonymous life and not this thing. But my people on the set are aware of my body of work. Right. The people on the streets, which are Indians or Asians, उसमें सब है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जितने भी हैं, मलेशियन वगैरह, वो सब हिंदुस्तानी फिल्में इतनी ज्यादा घरों में घुसी हुई है कि it's amazing. Part of Russia, there are so many people who love Indian movies, Uzbekistan वगैरह. But I wanted to be a newcomer all over again. So, and also when you do English films, your work is 10 days or 15 days and you do one scene a day. Over here, I have to do 4 to 5 scenes every single day. So my life started that I will get up at 5 o'clock, do my lines, because it's a medical drama. My medical terms जो हैं इतनी मुश्किल हैं, और मैं अंग्रेजी की भाषा का इस्तेमाल करता हूँ to communicate. Right. But when you are given those dialogue where negrilisis is the word, then metamorphosis or तो मैं तो घबरा जाता हूँ. और फिर वो भी अमेरिकन तरीके से बोलना है. No? How did you speak one of the sentences in American accent? Sorry, नहीं मुझसे American accent में बोला होगा ना, या पंजाबी accent में ही बोला आपने? कश्मीरी accent. कुछ लोग जो हैं, कुछ शब्द जो हैं, जैसे वो अपने तरीके से बोलते हैं, हमारे यहाँ अपने तरीके से उन शब्दों का इस्तेमाल होता है. बट जब मुझे लगता है कि ये मेरा मन में मतलब इतने गुड ह्यूमर मजाक उड़ाते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ बोलिए अनिश्चित काल. चलो बोल के बताओ वास्तविकता, या बोल के बताओ ओम श्री गणेशाय नमः सरस्वती माँ भागी विद्या कमलोचनी वेश रूपी, बोल के बताओ. तो निश्चित काल में बोल सकता हूँ, के गाने भी गवाता हूँ. बट इट्स अ वेरी वंडरफुल यूनिट टू वर्क विद. आई थिंक that's a joy to work with. But I did not want to go there with the tag of this thing. So I'm happy that I went there as a nobody and I can roam around. I can walk on the streets of New York. I'm keeping myself fit. There is a gym in my building. There is a swimming pool. I started learning swimming. I never knew swimming. I started learning swimming. Right. Started doing piano classes earlier. I go to see movies. I am now the part of Academy of Oscar this thing. So I get invited to the films which are not released. So it's a great. Plus, you're friends with Robert De Niro, huh? And I am proud and sort of very. I get cheap thrills by saying that I am friends with Robert De Niro, and through him I went to see this Irishman premiere, and there I met Martin Scorsese, Al Pacino. Al Pacino. These people is like you're meeting the 8th wonders of the world. Right. If you are an actor. Yeah. और उसके बाद वहां जाकर के उसके बाद अपने दिमाग का भी तो चर्निंग होती है ना. हाँ. You feel so many. हाँ जी, आप बोल रहे हैं प्रभु जी, क्या बोल रहे थे? मैं पूछा वहां जाकर कि नेशनलिज्म का जो एजेंडा है आपका देश में, वहां पर लिबरल आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं नेशनलिज्म एजेंडा जैसे कोई बीमारी है.
नहीं, लोग समझते हैं, मैं तो नहीं समझता। आई एम प्राउड टू बी ए नेशनलिस्ट, हिंदुस्तानी liberal nationalist, not nationalist. I'm proud to be a liberal nationalist, but not a fundamentalist nationalist. But वहां जाकर के आपको लगता नहीं ये पढ़े लिखे लोगों को डिफरेंस पता होता है, मुझे तो ये डिफरेंस पता नहीं है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पीछे किताबें लगी हुई हैं। नकली है, मैंने कोई किताब लिखी ना, पढ़ता बहुत कम हूँ किताबों को, मैं बोलना जानता हूँ थोड़ा बहुत, जी आप लोगों से सीख लेता हूँ। तो वहां पर भी आपको तो बहुत प्यार करते होंगे लोग, वहां पर ऐसे लोग बहुत हैं जो एक लीडर जैसा आदमी ढूंढ रहे होंगे, तो भारत वर्ष का झंडा उठा के घूमता रहा वहां पर। ऑफ कोर्स, मैं तो वहां पर जब भी जाता हूँ, जो भी काउंसिल जनरल के जो हमारे फंक्शन होते हैं, मैं जाता हूँ 26 अगस्त 15 अगस्त मैं अपने सेट पे मनाता हूँ, 15 अगस्त मैं अपने सेट पर 26 जनवरी मनाता हूँ। वो अगर 4th of July मनाते हैं तो मैं 15 अगस्त क्यों नहीं मना सकता? वो अगर नेशनल एंथम के समय खड़े होते हैं या अपने दिल पर हाथ रखते हैं तो मैं अपने नेशनल एंथम के लिए खड़ा क्यों नहीं होऊंगा? हमारी पहचान ही है, देश का झंडा और देश हमारी पहचान है, यही तो बात है। प्रॉब्लम क्या है कि सो कॉल्ड लिबरल्स ने इतना अपना एजेंडा बना रखा है कि उनके उस एजेंडा को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कभी कभी इसको अपने स्लीप पर लेके चलना चाहिए। तो आप न्यूयॉर्क में वो झंडा कर रहे हैं ना, लिबरल्स का जो मोनोपोली वहां बनी हुई थी अभी तक, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने देश से लेना देना है। और उसमें दिवाली वाले दिन भी मैं जाता हूँ, जब दिवाली होती है या ईद वाले दिन भी मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, जो हिंदुस्तानियों को होता है। मेरे को बहुत सारी बार पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर या बांग्लादेशी टैक्सी ड्राइवर लेके आते हैं, अपने अपने वतन की बात करते हैं। वहां पर कोई इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। जितने भी पाकिस्तानी ड्राइवर्स होते हैं येलो कैब के, उन सब ने हिंदुस्तानी फिल्में देखी हैं। वो सब पूछते हैं कि शाहरुख खान के बारे में बताओ, आपने शाहरुख खान के साथ 7 फिल्में की हैं, या दिलीप कुमार के साथ वो थप्पड़ वाला जो सीन है वो पता, और मैं करके दिखाता हूँ, पूरा डायलॉग बोल के दिखाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट अनुपम जी, जब आप वापस आते हैं इंडिया तो आपको वो डिविजन्स दिखाई देते हैं जो आपको वहां नहीं दिखाई देते। वही ट्रेजेडी है ना कि वहां सब इकट्ठे हैं। I have learned over a period of time in the last 2-3 years or 1 or 2 years, I've learned to sort of ignore and not react to everything that I see. You know, it's not necessary because it takes your energy. It takes everything. It takes too much of energy to sort of keep proving certain point of view. ये हर देश में अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं। अमेरिका में देख लीजिए आजकल क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वो प्रॉब्लम, अब फ्रांस में चले जाइए, ब्रिटेन में चले जाइए, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर आजकल नहीं है? तो हर जगह बिखरे हुए हैं। बट जब वक्त आता है तो सब लोग साथ हो जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो सब लोग साथ होते हैं। बट आई थिंक ये सबका फंडामेंटल अधिकार है कि अपनी अपनी राय व्यक्त करें। अब किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी का दूसरे का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता है, ये अलग अलग है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्नड टू सॉर्ट ऑफ realize that it's not that you have to react to every statement that somebody makes, that you have to sort of, so आप नोट करेंगे पिछले 1 साल में मैं काफी बैक सीट ले रही थी, not because I don't want to do it, but I'm doing so much work. You have to surround yourself with positivity. As it is, the world is full of, look at what is happening in 2020. If you on top of it start getting into this, then there is no end to it, and you need a peace of mind. It's important to have that. But आपको लगता है the film industry, sorry, Ms. Chawla, just one point. आपको लगता है the film industry is divided currently along political and somewhat religious lines as well as never before? After all, आपका भी नसीरुद्दीन शाह से publicly एक विवाद हुआ था और उन्होंने कुछ बोला, फिर आपने कुछ बोला। This is true for every industry. आपको क्या लगता है पत्रकारों के बीच में मतलब बहुत प्रेम है? You can really demarcate the patrikar and journalist and put a line to them. This is from this faction. This is from this faction. And this is very evident. फिल्म का जहां तक I don't think religious level पर हम बटे हैं. Yes, political level पर जरूर बटे हैं। और नसीरुद्दीन शाह साहब ने, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे सीनियर हैं और मैंने उनके बारे में कभी अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं बोला। I think he took a little far away when he said कि इनके खून में है ये। So it was important to give it back to him and I'm happy. कावेरी ने जो सवाल पूछा मैं थोड़ा आगे लेना चाहता हूँ। ये डिवीजन जो हुआ, जो ऑब्वियस डिफरेंसेस सामने आए हैं,
बॉलीवुड में या पत्रकारिता में जब आपने बात उठाई है, मैं आपसे सहमत हूँ. There is some kind of visible disagreement on political lines, both in the Bollywood, intellectual cells, and media as well. But I'm asking this question since you are in America now, you must be facing the same problem. People see you as pro-Modi, pro-Hindutva. तो आपको वहाँ भी ये लगता हो कि डिवीजन ज्यादा है और you represent a particular color of India, which may not agree by everybody else there. Have you felt that in New York? No, I think New York is full of Mr. Modi supporters. At least that I met. I feel that Mr. Modi has done a lot of good for our image, India's image abroad, but that's a separate issue. जो हिंदुस्तानी फिल्मों में जो इसका डिवीजन है, ऐसा नहीं कि पहली बार आया, ये पहले भी लोगों को पता था कि जनता दल के साथ कौन है, या मेरा कहना यह है कि जो आदमी वोट देता है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है. जब आप उस डब्बे के पीछे जाते हैं और आप किसी भी चिन्ह पर अपने मोहर लगाते हैं, you have put yourself, aligned yourself to a political party. The only thing is the world does not know it. Right. So anybody who votes belongs to a political party unknowingly or believes in a political party. I think this whole thing started when in 2014, before Mr. Modi was about to become the candidate for prime ministership, there were 60-70 people from film industry who made a petition where they sort of said that Mr. Modi should not be the prime minister of the country openly. Who were those signatories on that letter. I think that was the beginning of a divide, because that was the first time when a section of film industry people, whether they were writers, directors, or actors, who on a piece of paper put a situation where they said, ये आप साइन करोगे, ये हमने ये सोचा है. फिर जब ऐसे लोग आए तो बाकी लोग जो उन पर नहीं बिलीव करते हैं, जो मिस्टर मोदी को बिलीव करते हैं, या whatever that is their ideology, they said that why? So that is how this whole thing came out. It was not there, it was hidden. People were nice, people were not vocal about, not like West. In West they put jhanda outside of Democrats or of Republicans. Yes, Republicans. You're right. हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता, पर ये तब ये सामने आया जब ये बोला गया कि यार, जब कुछ लोगों ने लेटर लिखा अमेरिकन्स को कि इनको जो है वीजा नहीं देना चाहिए, वो भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसमें थे. So when those people were very evident about their likes and dislikes, that is how it started. Yeah, Anupam, you are right. They wrote the letter also there. And what I am saying that there is conviction. My favorite phrase has been, conviction is a matter of convenience. बॉलीवुड में पहली बार दिखाई देगा जो लोगों ने मोदी जी के खिलाफ झंडे गाड़े, जो धरने पे बैठ गए, और मोदी जी के सबसे बड़े भक्त उनमें से कुछ हैं, और उनके घर भी पहुंच जाते हैं, बुलाया जाता था, फोटो भी खिंचवाते हैं. तो बॉलीवुड में भी एक साइकोपैथिक टर्न हुआ कि जैसे मोदी जी ने उंगली खड़ी की, सब आकर के लेट जाते हैं वहां पर. तो ये एक नया फिनोमेना आया है कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को भी better to लेट जाओ in front of Modi ji than in front of the other person who is trying to be the prime minister for the last 15 years. At least he knows his job. At least he knows for the last 20 years, for 15 years, he was the chief minister of Gujarat. And for the last so many years, he has been a party to a political party. So I am glad that people who झुक जाते हैं, लेट जाते हैं, for a person who has earned that respect and earned that adulation, rather than a person who can't speak a one sentence without making 3 mistakes in it. But I don't know whom you're referring to. But come on. ये तो मतलब. पर ये बात सच है कि 2004 में धरने पे बैठे या कुछ और किया, उसके बाद यहाँ पर करके बुलाया गया, उनको बड़े फिल्म स्टार हैं, उनके नाम भी अजीब किस्म के हैं, पर लगता नहीं कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इस तरह के, they were always entertainers, they were not part of political narrative. But आप क्योंकि झंडा गाड़ के चलते हैं कि मैं आपके मोदी जी के साथ हूँ, मोदी की विचारधारा के साथ हूँ, मोदी जी जो करते हैं वो मेरे को भी वही पसंद है, ये नहीं कि आप उनको इसलिए पसंद करते हैं कि वो एक विचार, पर आपकी विचारधारा भी उनसे मिलती है. पर एक बात बताइए, किसी की कोई कन्विक्शन है, उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, वही मैं कह रहा हूं. आप कहेंगे कि आपका ये दोस्त है पिछले 25 साल से, यार ये आपका दोस्त पिछले 25 साल से, इसमें ये खामी है, आपका दोस्त नहीं होना चाहिए. कल को आप कहेंगे कि आपके पिताजी, माताजी या आपके जो कजन्स ब्रदर हैं, ये क्या बात हुई?
मतलब कोई किसी को पसंद करता है तो आप उसकी पसंद पर, अब मैं आपको कोई पसंद पेंटर पसंद है, मुझे वो पेंटर पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा वो पेंटर अच्छा नहीं है. Anupam, why I'm raising this question because Bollywood was earlier divided among individual groups कि ये शाहरुख खान ग्रुप है, ये कोई आमिर खान ग्रुप है, ये अपने जो बाकी लोग हैं उनके साथ ग्रुप जो उनके साथ होता है. अब क्या हो गया कि now it has become a Modi versus the rest. ये एक किस्म People से have made that. You people who have journalists who have, they have made that. It is जर्नलिस्ट आपने तो नहीं कहा कि आपको तो पहले ही पता था. अब मैं नाम नहीं लेना चाहते आपके बहुत सारे कुलीग्स के, जिनको देख के पता था ये सोनिया गांधी जी के साथ हैं, ये राहुल गांधी जी के साथ हैं. जब ये सोनिया गांधी जी का इंटरव्यू करते हैं तो पूछती हैं आपकी सास को कैसा खाना पसंद था किचन में, या ये जब इस तरह, तो ये तो हर जगह था. ये कोई इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है. ये 2014 के बाद शुरू हुआ ना ज्यादा, बिकॉज 2014 में वो खत लिखा गया. नहीं, मैं आपने तो सब लोगों को जोड़ दिया ना, हमको भी उसके अंदर लपेट लिया, तो इसलिए मैं जर्नलिस्टों को भी लपेट लिया. पर लपेटे हुए हैं ना यार, आपको पता है. नहीं है कि मतलब आप नाम नहीं ले रहे तो मैं भी नाम नहीं ले रहा, वरना तो आपको पता है एक पूरी फहरिस्त है. नहीं, कल एक डिबेट CIA में हो रही थी, उसमें मैं पार्टिसिपेंट था. मैंने यही कहा कि आजकल सबको पता है कि शाम के टीवी चैनल पर कौन क्या बोलने वाला है. ये पहले predictability of journalism was not a virtue. Now it has become a virtue. There were प्रभु जी, आप तो, मैं आपको स्ट्रगल के जमाने से जानता हूं, और there are disillusionments with certain people on every level. There are certain journalists who were my heroes. Who were my heroes really of my struggling days, of my earlier days in movies, and then they turned out to be zero. Whatever, not because, and this was much before 2014. It was much before Mr. Modi came on the forefront. I was so badly disillusioned. Like people must be disillusioned with my performance in a film. कि यार ये तो बड़ा अच्छा एक्टर था, इसने साराज में कितना अच्छा काम किया था, मगर ये निगाहें फिल्म में इसने कितना बुरा काम किया है. But वो project to project होता है. There were so many people who were fearless. I thought यार ये तो fearless हो गए, और बाद में पता चला कि ये तो नहीं, ऐसा नहीं है. So I think हम आसानी से टैग कर देते हैं लोगों कि यार इसका ये टैग है, इसका ये है, इसका ये है. ऐसा नहीं है कि अब अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग तरीके से बात नहीं होती है. शायद ये जिद हो जाती है जब आदमी प्रूव करना चाहता है कि यार तुम जब भी मोदी जी कोई अच्छी बात करते हैं तो तुम अपने घुस जाते हो, जब फलाना कोई बुरी. आप मुझे बताइए, एक प्रजातांत्रिक तरीके से एक आदमी 2 बार जीता है ऐसी मेजॉरिटी के साथ, तो सिर्फ मैं नहीं, वो तमाम करोड़ों लोग भी होंगे ना जिन्होंने वोट दिया है. मतलब 2014 में तो, 2019 में तो ज्यादा वोटों से जीते ना, तो किसने जिताया 2014 में, 19 में? सो आवाम उनके साथ, इस बात को मान के चलो कि आवाम है, दुनिया पूरे इतने परसेंटेज भारतवासी उनके साथ हैं, because they believe in him. Just because a Bollywood actor is talking about his achievements does not take away the fact that there are millions of other people. And unfortunately, what is the problem? What is the tragedy? The tragedy is when BJP was in opposition, it was a very strong opposition. There were leaders like Atal Bihari Vajpayee, there are leaders like Mr. Advani, there was Sushma Swaraj, there are Arun Jaitley जी, जो खड़े होके बात कर सकते थे और बात करते, और उनमें ग्रेविटास था. Unfortunately, in today's time, anybody who stands up, you discover that there is a story behind this person. So, unless we have in opposition leaders of credibility, it is very important to sort of have opposition leaders which are very strong and credible. Unfortunately, today वो नहीं है. Anupam, sorry. Anupam ji, I wanted to ask you, you've been offered, candidacy in elections before by the BJP and perhaps by other parties as well. By every party. Yeah. Why have you not joined any political party? Why have you not joined politics? Because I'm not interested in it. I'm not interested in, as an individual, as just a independent person. I think my voice is, to some people, to majority of people, a voice of a truth. But the moment I join a political party, then becomes that voice of that party.
as it is, people say that your wife is in BJP and you are so and so of so and so prime minister, so that, but that is asides that. I have been offered since 20 years this ticket from various party, and it does not necessarily, अब शायद बड़े बड़े लोग फोन करते हैं एक्टर्स को, बट शुरुआत में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का कोई आपके पास आदमी आ जाएगा, थोड़े नाल चाय पीनी है या जो भी है, आपका क्या विचार है। दूसरा, जब मैं जब मेनका गांधी जी की पीलीभीत पर उनकी कैनवसिंग के लिए गया था, बिकॉज मुझे प्रीतिश ने कहा था कि यार वो दिलीप साहब भी जा रहे हैं, तुम भी चल, कर्मा साथ में रिलीज हुई है, तो हम पीलीभीत में करोड़ों की जनता देखने आती थी हमारा वो रैली, और हमको बोलना होता था कि मेनका जी बहुत अच्छी हैं वगैरह वगैरह, जो भी डायलॉग सुनाना होता था मुझे। दैट इज द ओनली इलेक्शन शी इज लॉस्ट। So my point is that ऐसा नहीं है कि जिस दिन मुझे ज्वाइन करना होगा, I will do it on a डंके की चोट, because I will need people to sort of help me. I will need people, but I don't. The fact that I went to America was that there is an actor in me, there's a creative person in me who's much more dominating than the person in me who wants to be a politician. But what about Kashmir, Anupam ji? Don't you feel that Kashmir needs a leader who can actually represent the pundits who are not represented politically? Not much in any case. Everybody in the government represents Kashmir now. The abrogation of the Article 370 has been done by this government. So they are much more capable leaders for Kashmir than I would have been, or I can be. I'm a voice, and my voice I have used at every platform to talk on behalf of Kashmiri Pandits. It was important, and it's important. I always said it, that the only way to solve the problem of Kashmiri Pandits is the abrogation of Article 370, because the moment you allow the rest of the people from India, it will settle down a situation, and that is what has happened historical. So, do you agree with the way it was done? Kaveree, just a minute. Yeah, sure. Made a very important statement. Yeah. Abrogation of Article 370 was in the Jansangh agenda, for RSS agenda. Everybody, they have done it. Well done. 35 years, have khatam kar diya. But don't you think that what the promises they were making for the last 20 years, हम कश्मीरी पंडित को वापस ले जाएंगे और rehabilitate कर देंगे. Kaveree, of course, is against going Kashmiri Pandit going back there. But, I'm just joking for you. And he's on the other side. But लगता नहीं है ये इस गवर्नमेंट के अंदर वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि कश्मीरी पंडित कोई बड़ी संख्या में अपने घर को वापस ले सकेंगे. अभी तक तो कोई जाता दिखाई देता नहीं. ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. मैं आपका सवाल समझ गया. ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो आइडियल सिचुएशन होती है. अरे प्रभु जी इंडिया टुडे में अच्छे थे, कावेरी जी इंडिया टुडे में अच्छी थी, आज क्यों इस न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आ गए, वहां पर बेटर रहते. तो ऐसे बोलने वाले आप सबकी बात थोड़ा सुनते हो. बात करना कौन है कश्मीरी पंडित? आपने बात करना जो है ना वो आसान है, कि हर जो टिप्पणी करना जो एक बात है, और एक्चुअली 60 साल के बाद ऐसा होना ये बहुत बड़ी बात है. तो आई थिंक दिस इज समथिंग. कानून के ऊपर कोई बात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कश्मीरी पंडित कब जाएंगे या जा पाएंगे? जब आप लोग लेके जाओगे, जब आप और कावेरी वहां पर अपना घर बनाओगे, हम चलेंगे. कश्मीरी पंडित कोई ऐसे अब भेड़े थोड़ा है कि लेके चले जाओ इस इलाके में, डाल दो उसी जगह, डाल दो जहां पर उनके घर जला दिए गए थे, उसी जगह डाल दो जहां पर उनको मार दिया गया था. आपने बनाए से, आपने मीन्स नॉट आपने और कावेरी ने कश्मीरी के मुद्दे को कहाँ जिंदा रखा है? इस मुद्दे को जिंदा कितने आपने आर्टिकल लिखे हैं कश्मीरी पंडितों के घर बेघर होने के? मैं जब आपको I'm saying I'm not actually asking you, I'm just saying that. Correct. मैं आपको आर्टिकल गिना देता मैं अभी थोड़ी देर में. नहीं when I'm saying आपको, it is a matter of saying that you, it is one. कहाँ पर मुद्दा जिंदा रखा है पिछले 30 साल से? इसको पूरे को एक रग के नीचे दबाया जा रहा है कि ये 30 साल से जो 4 लाख कश्मीरी पंडित निकाल दिए गए थे अपने घरों से, उनका मुद्दा, उनके बारे में किसी को तकलीफ नहीं है, उनके बारे में किसी को परेशानी नहीं है. आज 4 महीनों से इंटरनेट नहीं है, वो उसके बारे में परेशानी होती है सबको. तो देयर इज नो एंड टू इट. वही तन लागे जिस तन जो तन पहनता है. जब आपके अपने किसी रिश्तेदार को पता चलता है कि यार इसके साथ ऐसा हुआ था, तो हमको वो तकलीफ पता है. तो ये तो बिल्कुल ही टॉपिक के बाहर बात है कि इस बारे में कि आप कह रहे हैं कि आप या कावेरी समझते हैं कि आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए था.
अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हम लोग, हिस्टोरिकल कोई भी नहीं कह रहा, बहुत बड़ी बात है। और हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। मेरा व्यू है, कावेरी का पता नहीं क्या व्यू है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात होती है आप बुला लेते हैं व्हाट अबाउट कश्मीरी पंडित्स। अरे व्हाट अबाउट कश्मीरी पंडित्स? आज तक लोग बोल रहे हैं व्हाट अबाउट द जूस, 6 मिलियन जूस व्हिच वर बुचर्ड एंड किल्ड। आज तक लोग बोलते हैं अपने अपने घरों में। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस हैज हैपेंड। अब वो कश्मीरी पंडित कैसे जाएंगे, वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ना, बिकॉज कश्मीरी पंडित बाय नेचर आर नॉट वायलेंट। उनमें से किसी ने भी बंदूक नहीं उठाई, उनमें से किसी ने बॉम्ब नहीं बनाए, उनमें से किसी ने नेता को मारा नहीं। जस्ट बिकॉज दे आर सेल्फ रिलायंट एंड जस्ट बिकॉज दे बिलीव इन कि ठीक है यार हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोगों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। वो अलग अलग इलाकों में चले गए। मैं कश्मीरी पंडितों को अमेरिका में मिलता हूँ, मुझे जब भी उनके बारे में बात होती है पूरे हादसे के बारे में तो सबके तकलीफ सामने नजर आती है। अनुपम आपने कह दी बात, मैं आपको कहूँगा यहाँ पर, आपको कहूँगा क्योंकि आप डाइवर्ट इश्यू कर रहे हैं थोड़ा सा, मैं भी कर रहा हूँ, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपने वो रग को पकड़ा है जिस रग से मैं तड़प उठता हूँ जी। हाँ, तो इसी को तड़पाने के लिए मैं, क्योंकि मैं भी कश्मीरी पंडित के बारे में पिछले 10 साल से 15 साल से लिखता रहा हूँ जब भी मौका मेरे को मिलता है। कश्मीरी पंडितों में कोई लीडर ही नहीं है जो आकर के सामने एक कंसिस्टेंट लड़ाई लड़े, वो दिखाई देता है। या टेररिस्ट कोई नहीं है? नहीं, वो बात नहीं है। मनोनीत लोग हैं जो पार्लियामेंट में भेजे गए हैं, जो इन लोगों का, जो इन चीजों का मनन करते हैं। आई थिंक दे आर द लीडर्स। नो 370 अबॉलिश करना ठीक है, 35 से अबॉलिश करना ठीक है, बट द क्वेश्चन इज आर यू कॉन्फिडेंट दैट कश्मीरी पंडित्स, द जेन्युइन सेक्युलरिज्म ऑफ कश्मीर विल बी रिस्टोर्ड सून और नॉट? For 65 years, we did not have the confidence that Article 370 will ever go completely. That is a done thing. That is not a done thing. That stems out of the fact that for no government tried to do that. But this piece of legislation, which is very good, doesn't give you a right to confidence to go back to your own state. Confidence comes out of security, my friend. तो इनसिक्योर कश्मीर है क्या अभी भी? आप इसकी अचीवमेंट को, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इसकी अचीवमेंट को आप कम कर रहे हैं कि यार वो तो हटा दिया, बट तुम्हारा क्या फायदा? हमारा बहुत जहनी तरीके से फायदा है साहब। कभी कभी फायदे फिजिकल नहीं होते हैं, एक मन की शांति के फायदे होते हैं। जब किसी को कोई मारता है और उसको जरूरी नहीं है वो 6 साल तक जो है वो निर्भया की माँ, 7 साल तक निर्भया की माँ जो है झगड़ा करती रही, सोचती रही, उसको हर बार लास्ट के कुछ 6 महीने तक हर पेशी में बदल दिया जाता था, फांसी नहीं लग रही थी, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको तकलीफ नहीं हो रही थी। तो तकलीफ ऐसी चीज। आप लड़ाई करने के लिए आप लीड करिए ना, कौन करेगा इसको लीड? अमित शाह करेंगे, मोदी जी करेंगे। दे आर नॉट कश्मीरीज, डजंट मैटर। How does it matter? It means how does it matter? Kashmiri पंडित don't have to be Kashmiri, you have to be an Indian to think about Kashmiris. Correct, but question is local leader ही लड़ते हैं ना चुनाव तो वहाँ पर। क्यों? अमित शाह या मोदी जी ने लोकल लीडर के लड़े कश्मीरी कोई भी। अमित शाह और मोदी जी ने एक अच्छा काम किया कि एक एनवायरनमेंट आपके लिए खड़ा कर दिया, एक लेजिस्लेटिव कर दिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। उसके बाद बाकी लड़ाई तो बाकी लोगों को नेचुरली खुद लड़नी पड़ेगी ना। नहीं, अब ये तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि मतलब कि ये वो आपको कोई नेता बनना चाहिए कश्मीर का तभी हो गए। हम नेता ही हैं, हम इंडिपेंडेंस आवाज से बात करते हैं। तो आपको लगता है कि एक और मुरली मनोहर जोशी वहां झंडा लेकर के जाए, उसके पीछे बाकी लोग चलेंगे? वो जरूरी नहीं, आप झंडा लेके चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। मैं जरूर, पर आपके दिल में और कावेरी के दिल में कश्मीरी पंडितों मेरे को कश्मीरियों के झंडा लेके चलिए, मैं आपके पीछे चलूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कश्मीरियों के बात ये आती है ना, मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं कश्मीरियों के पीछे चलने के लिए तैयार। यही तो प्रॉब्लम है, हम हिंदुस्तान कश्मीरी चले आगे, सबके पीछे चलते हैं। आप अनुपम संघर्ष करो, हम आपके पीछे हैं। नहीं, ये तो आप तो ये कह रहे हैं कि पंजाबियों का दर्द सिर्फ पंजाबियों को होना चाहिए, तमिलनाडु के लोगों का दर्द सिर्फ तमिलनाडु के लोगों को होना चाहिए। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं चलता। हम बेशक डाइवर्स लोग हैं, इतनी सारी हमारी 22 में भी 23 अनऑफिशियल लैंग्वेज है, मगर साथ में तो चलना पड़ेगा ना। Prabhu ji, some questions. Prabhu ji, lots of questions from the audience also. What was the first thing you said to Martin Scorsese? Indra has asked. Oh, nice question. निशब्द था मैं, because I had met him earlier on Mr. De Niro's birthday. Right. So मैं सोच रहा था इनके साथ फोटो कैसे खिंचाऊं। मेरे जब इन लोगों को मिलता हूं तो मेरे अंदर का
जो फैन है वो ज्यादा निकल जाता है. I never can behave as an equal. It's like meeting Dilip साहब और meeting महबूब खान और meeting सत्यजीत रे. When I met सत्यजीत रे, फोटो कैसे खिंचाऊं? Because photo becomes या फोटो ऑटोग्राफ से नहीं, तो मैंने उनके हाथ कहा था कैन आई टेक ए पिक्चर, तो मिस्टर डिनीरो ने कहा इज अ वेरी फाइन एक्टर, वी वर्क टुगेदर इन सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, एंड आई टोल्ड हिम दैट आई हैड, एंड व्हिच इज द ट्रूथ, I had done a research in drama school on mean streets and taxi driver. Acha, wow. So I had told him that that's what I did. So I got very interested in that. He said, so he spoke to me for briefly, but when I met him at the premiere, again मैंने कहा फोटो कैसे खिंचाऊं. तो वही था, बाकी तो these are legends, these are amazing people. Yes. अनुपम, एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, कश्मीरी पंडित ने ही पूछा है सवाल. उसका नाम है जवाहर राही राणा. उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया है, व्हाट इज द व्यू ऑफ मिस्टर अनुपम जी अबाउट डिटेंशन ऑफ ऑल फॉर्मर सीएम्स ऑफ J&K who are with the mainstream politics? What is the view? I think this is an issue, so he should ask the Ministry of Home Affairs. As a citizen of Kashmir, आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का जवाब दे सकते हैं. ये सवाल मुझे बैकफुट पे लाने की कोशिश करने के लिए आपने चुना है, ये क्योंकि आप उन्होंने भेजा, मैं फेसबुक पढ़ देता हूं, मैंने तो पोस्ट नहीं किया फेसबुक पे. उन्होंने फिर पोस्ट किया, मैं पढ़ लिया. सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, बट आई थिंक मैंने अब्दुल्ला बाहर निकलते हैं और कश्मीर के बारे में जो बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों के बारे में, तो आज तक मैंने उनसे कभी ना फारूक अब्दुल्ला साहब से बात सुनी है. जबकि फारूक अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर थे, वो लंदन में बैठे हुए थे जब ये पूरा चल रहा था. 1989 में वो लंदन में थे for 2 years. एक सवाल किसी और को, वो डिफरेंट सवाल है. एक सवाल आया है, मिस्टर खिरवातकर हैं, प्रवीण खिरवातकर, उन्होंने पूछा कि कलाकारों का भविष्य कोरोना के बाद क्या है? हाँ, पूरे बोलो, पूरे कायनात का भविष्य पूरे इस कोरोना के बाद क्या है, ह्यूमैनिटी का भविष्य क्या? मुझे लगता है कि पूरे कोरोना से there will be a positive change in us, because हमको, इंसानों को अपनी औकात पता लग गई कि हम एक कुछ कण हैं इस प्रकृति के सामने, मदर अर्थ के सामने. मदर अर्थ ने हमने दावा किया कि हमने लोगों ने, वर्ल्ड के लोगों ने, कि हम मंगल तक पहुंचने वाले हैं, हमारी आर्मी इतनी बड़ी है, हमारे पास अणु शस्त्र हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और एक छोटे से वायरस ने हम सबको अपने घरों में बंदी बना दिया, पूरे वर्ल्ड को. सो आई थिंक इसके बाद, इसको कहते हैं कि ये अमृत मंथन है, अमृत मंथन के बाद जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है. वी विल हैव अ बेटर वर्ल्ड टू होपफुली लिव, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैव डिस्कवर्ड दैट. और हमारी इस कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में हमारी जरूरतें क्या हुई? हमारी जरूरतें हैं कि जाके यार राशन ले आए जैसे तैसे, सब्जी ले आए जैसे तैसे, और कहाँ सेफ महसूस कर रहे हैं? घर वालों के बीच में. So I think this fact will play a very important role post corona. और जहाँ तक actors का सवाल है, yes, it's going to be difficult because it's a community work. People have to come closer to each other. मेरी शूटिंग जुलाई में शुरू होने वाली थी, पर अभी कोई खत नहीं आया, तो शायद वो 70 सितंबर में जाएगी, because we have to work out how to go. अब मैं फोटोग्राफ देख रहा था इन फ्लाइट अटेंडेंट्स के, कि वो पूरे वो एस्ट्रोनॉट्स बन के जो हैं, hazmat suit पहन के. I think we will get used to the new way the world works. Right. देखो, एक मैंने सवाल पूछा, फेसबुक पे काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं. एक सवाल अभी फिर वो 35 वाला भी आ गया है. एक अपने फेसबुक कृष्ण बहादुर सिंह काना, उन्होंने कहा कि 378 हट गया, जो मैंने भी कहा, 35 भी हट गया. अब मुद्दा है कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का. अनुपम जी पुरजोर तरीके से इसकी मांग क्यों नहीं करते हैं और लीड क्यों नहीं करते? उनको क्या पता कि मैं पुरजोर तरीके से नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुरजोर तरीके. मुझे डॉक्टर स्वामी का बड़ा अच्छा आइडिया लगा वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ उस दिन मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम 2 लाख एक्स आर्मी ऑफिसर्स को वहां पर सेटल कर दिया जाए. जो 45-46 की साल में आर्मी ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं, उनको एक इंसेंटिव देकर वहां पर कर दिया जाए और उनके आसपास कश्मीरी पंडितों रख दिया जाए. तो शायद ये, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया, बट इट विल चेंज. आई थिंक हम जब आपके बच्चे किसी कलाकार का इंटरव्यू करेंगे, इफ दे डोंट बिकम एनीथिंग एल्स बट जर्नलिस्ट, maybe they will have, by that time they will have a solution. Things don't change. Are you supporting Subramanian Swami's idea? Yeah, I think it's a great idea. I think instead of then Kashmiri Pandits can follow them after that.
Yeah, exactly. I think it's a great idea. You can't make a separate colony and sort of tell them that यहाँ पर रहें और या उन्हीं घरों में चले जाओ जो आज बर्बाद हैं. Also out of the question. हाँ, possible ही नहीं. Sir, why don't you reform? This is a question. Why don't you reform the film institutes and remove the Tukre Tukre gang from spoiling the students there? This is a question that's coming. I think the fact that we have discovered the word Tukre Tukre gang, that in itself is an achievement. It's your contribution to a great extent. No, it is their contribution. They are the people who raise the slogans of Bharat Tukre Tukre. So they themselves announced who they are. You have a very bad opinion about me, Kaveree. No. It is not the truth at all. I did not discover them. They proved their identity to the whole world. Right. So the fact that we know who they are, then that in itself is an achievement. So every time they will make a statement, we will discover what is their actual motive. उनका रिएक्शन तो यही है ना कि अनुपम खेर जैसे लोग मोदी भक्त गैंग है. कोई बात नहीं सर, मोदी भक्त तो रिएक्शन टुकड़े गैंग का रिएक्शन देखो, कम भक्त होने से बेटर है कोई भी भक्त दूसरा भक्त होना. Anupam ji, have you taken a decision not to act in mainstream films after you started art house films and series? Any reason for this? This question comes from Rahul. Kaveree, you must name the person who has asked the question. Rahul. No, Rahul, that's not true. I have done so much work in Hindi cinema or Indian cinema, for that matter, that whenever a new role comes, I feel, is it something new that I have not done? Right. So when I see that, then if it's not something new, I'll rather find my own other things which challenge me as an actor. I would love to. I'm doing a film called Kashmir Files, Prabhu's favorite topic. Kashmir Files. Vivek तो वो मैं कर रहा हूँ. I'm looking forward to doing that. And we were supposed to shoot in June, but I think now, whenever we get a permission, मैंने एक और स्क्रिप्ट मुझे शाद अली ने सुनाया है. बड़ा इंटरेस्टिंग कॉमेडी है. It's very good. I might consider doing it, depending on when am I asked to come back. Go back to New York that way. Right. I would love to. I love working with my people. I have not done Hindi film for a long time over here. But you did One Day, which is on Netflix, and it was trending as well. Yes, how was that experience after a long time? That was very good. I shot that film in Ranchi. It was very good. The film could have been a little better, but I think it was trending for a long time on Netflix, which was very good. I tried to do a different kind of a role. It was the role of a retired judge who basically turns a killer. Right. And I tried to change my body language, etc., etc. Yeah, it was fun. Prabhuji, any last question before I wind it up? No, it's okay because you have answered all my questions. And in my actor, so I want to looking forward with another. Prabhuji, मेरी तारीफ में दो शब्द बोलो जाने से पहले. You have been my favorite actor. That's what I said. Thank you. I still watch you and I'm looking for कुछ भी हो सकता है जिंदगी में. हाँ, अच्छा मेरा जो प्ले है वो आ रहा है 7 तारीख को. एक बार आ रहा है कोई आपका. वो 7 तारीख को I am putting it on my website. The Anupam. कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. I think that's a play which deals with my failures and my never giving up attitude. So people in this time of lockdown can see that play. It will be wonderful. Thank you. Anupam, it used to be said in the 1990s, Mr. Chawla, that Hindi films could not be made without two things, raw stock and Anupam Kher. Yes. So it seems that the best entertainment in the world currently cannot also be made without Anupam Kher. And the consistent factor is the baldy Anupam Kher. Popular. Thank you so much, Kaveree. It was a pleasure talking to you. It was such a pleasure. Thank you. Thank you so much. Take care. Thank you. Thank you. Jai Ho. Jai Ho. Jai Ho. Jai Ho.